Hello, hello students. In this video, I am going to discuss solution of IIT JAM Physics 2023 paper, which was held yesterday. This year's paper is, I think, somewhat better than the questions that were asked in last 2-3 years. Okay, तो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है बट क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बट क्वेश्चंस आर बेटर एक्चुअली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे डेफिनेटली उससे क्वेश्चंस बेटर हैं ठीक है कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट रिक्वायर्स सम थिंकिंग ऑलराइट तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी it says there are three frame of references. F1 is moving with velocity c by 2 with respect to f0, and f2 is moving with velocity c by 2 with respect to f1, and there is a particle which is moving with velocity c by 2 with respect to f2. तो राइट साइड से अगर हम मूव करते हैं इधर ठीक है तो एवरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सो पार्टिकल का वेलोसिटी f2 के रिस्पेक्ट में गिवन है और f2 की वेलोसिटी f1 के रिस्पेक्ट में और f1 की वेलोसिटी f0 के रिस्पेक्ट में गिवन है ओके so now question is velocity of particle we have to find with respect to f0 okay so this question can be done in many ways what I'm going to do here is I'll apply the simplest approach देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि if you go from this frame to this frame so this is one Laurent transformation and if you go from this frame to this frame this is another Laurent transformation ठीक है so there are two Laurent transformation so let us do this let us go directly from this frame to this frame so instead of doing two Laurent transformation we are going to do a single Laurent transformation so we know that a single Laurent transformation is equivalent to two Laurent transformation actually तो एक सिंगल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो वेलोसिटी होती है अगर दो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद वेलोसिटी v1 एंड v2 है तो सिंगल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्विवेलेंट वेलोसिटी होती है ना दैट इज गिवन बाय v1 प्लस v2 एंड 1 प्लस v1 into v2 और डिवाइड बाय c स्क्वायर So here both the velocities are c by 2, so c by 2, c by 2. Both the Laurent transformation have been done at velocity c by 2, so it will become 1 by 4. So you get here 4c by 5. ठीक है टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्विवेलेंट अगर आप सिंगल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं देन दिस इज द वेलोसिटी फॉर सिंगल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओके this I always tell students whenever I teach special theory of relativity okay whenever I discuss some important concepts related to special theory of relativity I always tell this concept okay now तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि there is a frame f0 and there is a frame f2 and with respect to f0 f2 is moving with speed 4c by 5 and this particle is moving with speed c by 2 with respect to this f2 तो हमें इस पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है f0 के रिस्पेक्ट में सो वी कैन राइट लाइक दिस ठीक है velocity of particle with respect to f0 we want to calculate so this formula we all know velocity of particle minus velocity of f0 we'll write a 1 minus velocity of particle into velocity of f0 and divide by c square this so now let us calculate all these things with respect to f2 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f2 let us write f2 here also let's write f2 and here also we are writing f2 so here this it is given that velocity of f2 with respect to f0 is equal to 4c by 5 है okay so therefore if we write velocity of f0 with respect to f2 this will be minus 4c by 5 so this will use all right so therefore let us put all the values here okay so velocity of particle it is given to be with respect to f2 okay and that is given to be c by 2 so we are putting the values here c by 2 and velocity of f0 with respect to f2 velocity of f0 with respect to f2 is minus 4c by 5 so this becomes plus 4c by 5 and divided by 1 here you will put minus 4c by 5 so it will become plus actually so 1 plus you have c by 2 and here 4c by 5 okay and divide by c square so c and c will cancel out and you will get here if you take LCM you get 8 plus 5 so 13 or divide by 5 so this is 13c by 5 and here you get this cancel out so 2 by 5 you will get and when you take LCM you will get here 7 by 5 so here you will get 13 by 10 actually when you take LCM okay here you get 7 by 5 so this gives you 13c by 14 that's the answer
So that is the velocity of particle with respect to f naught frame. 13 c by 14. So it should be the answer. Okay. Now let's move to another question. This question is from electromagnetic theory. This question is actually related to slight modification of the concepts of electromagnetism. Okay. हम लोग देखिए जानते हैं the question says if del dot b is equal to mu naught rho m, then del cross E will be equal to. We know that existing theory of electromagnetism tells us that del dot B is actually equal to 0. And we say that this equation implies that there is no magnetic charge, there is no magnetic monopole. ठीक है, magnetic monopole नहीं है, that is the conclusion of this equation. And when this equation holds, we have another equation, del cross E is equal to minus del V by del T. We have this equation. Okay. तो del क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी. ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो एम लिखते हैं एंड वी डिफाइन मैग्नेटिक करंट डेंसिटी जे एम हियर इज मैग्नेटिक करंट डेंसिटी और दिस इज मैग्नेटिक चार्ज. ओके, तो डेल क्रॉस ई का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि नाउ वी आर डिफाइनिंग मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिक करंट. So we would expect magnetic charge and magnetic current to satisfy the equation of continuity, because we know that equation of continuity is satisfied for all types of current and charges. Okay, so we would want actually magnetic current and magnetic charge densities to satisfy the equation of continuity. ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे del cross E is equal to, हम लिखते हैं suppose I write this one, A option, Jm minus del V by del T. Okay, and now if you take divergence both side, take divergence. If you take divergence here, del dot del cross E, we know that divergence curl of a vector is 0, so that will become 0, and here you will get del dot Jm minus d dt of, and you will get here del dot B, and del dot B is, you see here, so this is del dot Jm minus del dot B is given to be mu naught. So here mu naught and del rho by rho m by del T. Okay. So now you see we are not getting equation of continuity. In equation of continuity, we actually have del dot J plus we get here del rho by del m equal to 0, and there is no mu naught term actually. Okay. अब हम analyze कर सकते हैं. See, if I had taken this one, okay, तो यहाँ पे देखिए this term ये तो सभी में similar है, ठीक है ना, minus del v by del t is present in all. Okay, so if I had taken this one, we would have got an extra row mu naught, तो mu naught हम common ले लेते हैं, then we would have gotten del dot j minus del rho by del t equal to 0. So again that is not the equation of continuity. But if I had taken this one, तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ से आप del cross E is equal to minus mu naught and Jm minus del v by del t, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, एंड नाउ यू टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे डेल डॉट एंड डेल क्रॉस ई एंड माइनस म्यू नॉट, सॉरी दिस इज माइनस म्यू नॉट एंड डेल डॉट जे एम, ओके, एंड माइनस डी डी टी ऑफ, ठीक है, डेल डॉट बी. So this, according to vector identity, this term is 0, and here you get minus mu naught and del dot Jm and minus d dt of, you see here del dot B is actually here mu naught rho m, so we'll write here mu naught rho m, and now you see if you just divide by minus mu naught, you are going to get here 0 equal to del dot Jm, okay, del dot Jm, and here plus del rho m by del t. Okay, that is equal to 0. You can see that we are getting correct equation of continuity for current and magnetic charge density, magnetic current and magnetic charge density only for option D. Okay, other options will not give correct equation of continuity. So that's why we should say that this can be the correct option. Okay, तो देखिए ये जो है ना एक possibility based question है कि if magnetic charge is discovered, okay,
प्रेजेंटली दिस इक्वेशन डजंट होल्ड इन फिजिक्स. ओके, फिजिक्स में कहीं पे इस इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं करते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज, इफ मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक मोनोपोल गेट्स डिस्कवर्ड, then how the Maxwell third equation, this is the Maxwell third equation presently, so how the Maxwell third equation will have to be modified. Okay, so in that case the correct form of the Maxwell's third equation will be this one. Okay, because it produces correct form of the equation of continuity. All right, so that's the correct option. Now, this is a question from mathematical physics. It says that suppose xy, there is a coordinate system xy and there is another coordinate system u and v. So question says we have to write the Jacobian matrix which transforms xy into uv. So this is nothing but you can see that that x has been rotated to a new position and now it is being called u. Y has been rotated to new position and it is being called v. So this is nothing but rotation of coordinate axis and it is clockwise rotation actually. It is not anti-clockwise rotation. All right. So हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय थीटा एंगल, अगर आप लिखना चाहते हैं. ठीक है ना, थीटा एंगल. So if you rotate coordinate axis by theta angle, you get here x primed is equal to x and here cos theta minus y sin theta. See, I'm writing for clockwise rotation actually. If you do anti-clockwise rotation, you get plus here. Okay, and here you get y primed is equal to x sin theta or plus y cos theta. So this is for clockwise rotation. So here this x primed and y primed are new coordinates. Okay, so instead of x primed and y primed, here we'll write u. This is u and v actually. ठीक है, इसमें u और v लिखा गया है. x has become x primed and y has x has become u and y has become v. Okay, so let's see the rotation angle is given to be 45 degree actually. This angle is 45 degree. So in place of theta, I'll put 45 degree. So we'll get here uv. Let's write it in matrix form. So 1 by root 2 will come out as common factor. And here we will get 1, here we will get minus 1, and here we'll get 1, 1, and here you can write x and y. Okay, so that's the transformation matrix which is given in option A. Okay, यहाँ पे root 2 है. So this should be the correct option actually. Okay. Now, this is another question. This is another question from mathematical physics. It says sum of eigenvalues. Sorry, there is a matrix A. Actually, you know, different student have given this matrix डिफरेंटली. कुछ स्टूडेंट ने हमें यहाँ पे 2 लिख करके भेजा है, कुछ ने 1 लिख करके भेजा है. सो एक ने तो सिर्फ 0.5 लिख करके भेजा है. ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है. तो I have taken here 1 1 and minus 0.5 minus 0.5. This will be actually I think easier to calculate. तो आप लोग अगर 2 होगा तो फिर जिस तरह से हम मेथड बता रहे हैं उसी तरह से आप 2 को लेकर चेक कर लोगे क्या आंसर आता है. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी. तो इसमें देखिए लिखा गया है sum of A matrix is given to be this and B matrix is this. Now question is sum of eigenvalues of B is B के eigenvalues आपको निकालने हैं. ठीक है ना, and you have to sum those two eigenvalues. Okay, obviously A is a 2 cross 2 matrix. If you put A here, you are going to get B also to be 2 cross 2 matrix. So B will also have 2 eigenvalues and we have to find sum of those 2 eigenvalues. Okay, so let's do that. Here मान लेते हैं, देखिए let's let lambda 1 and lambda 2 are eigenvalues of A. ठीक है, so that's the solution. So therefore here we'll get lambda 1 plus lambda 2, that is the trace of the matrix, which is the sum of the eigenvalues. So we are going to get here 1.5, and lambda 1 into lambda 2, that is the determinant of the matrix. And if you calculate determinant, you are going to get here 1. Okay, determinant is 1 here. Okay, so now eigenvalues
ऑफ बी विल बी। ठीक है, तो बी के आइगन वैल्यूज आप जानते हैं कि इतना हो जाएगा 1 + λ1 + λ1 स्क्वायर, और दूसरे आइगन वैल्यूज होंगे, दूसरा आइगन वैल्यू होगा 1 + λ2 + λ2 स्क्वायर। दीज आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ बी। तो इसका सम कर देते हैं, लेट अस सम इट। तो इसको सम करोगे तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे आपको मिल रहा है λ1 + λ2, एंड हियर यू गेट λ1 स्क्वायर + λ2 स्क्वायर। So that's the sum of the eigenvalues of B. We can write it as 2 plus and here λ1 + λ2. Okay, and plus we can write it as λ1 + λ2 whole square and minus 2 times λ1 and λ2. Okay, so now let's put the values. Okay, so we are getting here 2 plus and λ1 + λ2 is given to be 1.5 and plus here 1.5 whole square and here minus 2 into this is 1. Okay, λ1 λ2 was 1, so this 2 and this 2 cancel out, and here you get 1.5, and when you square it, 15 square is actually 225, right? So we get here 2.25. So therefore, when you sum it, you get here 3.75. That's the answer. Okay, so sum of the eigenvalues of B will be equal to this much. Okay. Now this is a question from mechanics. मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भेजे हैं मुझे, मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कोई कॉन्सेप्चुअल मतलब डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। सी द क्वेश्चन इज देयर इज ए रिजिड रॉड, इट इज ऑसिलेटिंग about one end, and there is a simple pendulum, it is also oscillating about this pivot. Now question is, its angular frequency of oscillation is omega r and it's omega s, so we have to find ratio of the two. तो ये तो मतलब थ्योरी में, रिजिड वेव डायनामिक्स में तो ये बताया ही जाता है। इन दिस केस ओमेगा आर जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, एम जी एंड डी एंड डिवाइडेड बाय moment of inertia. Okay, so here this is mg and d is basically distance between pivot and center of mass. So center of mass is here, pivot is here, this distance will become equal to L by 2, and here I is moment of inertia about the axis of rotation. So axis of rotation is passing through this point, so that is ml square by 3. This we know from class 11th level actually. Okay, so m will cancel out and you get here 3 by 2 root under g by L. And for simple pendulum, we all know that this is root under g by L actually. Okay, so therefore, if you divide omega r by omega s, you will get here root under g by L will cancel out and you will get here 3 by 2. That's the answer. Okay. Now let's discuss this question from quantum mechanics. This is a basic question from very basic question from quantum mechanics. If you have just read a little about simple harmonic oscillator and you know the basic postulates of quantum mechanics, you can answer this question. Okay, the question is, there is a superposition state of a particle. So particle is not in any of the eigenstates of Hamiltonian, it is in a superposition state. So these are basically ground state, first excited state and second excited state. तो आप देख सकते हैं psi is a linear combination of these states, so that's why we are calling it superposition state. All right, now question is, if energy measurement is done for this state, then what is the probability of getting energy equal to, so question is probability of getting energy equal to 5 by 3 h cross omega is non-zero. Similarly, probability of getting energy h cross by 2 is non-zero, मतलब probability zero आएगा या non-zero आएगा ये सिर्फ पूछा जा रहा है, probability is not being asked. Okay, probability भी हम लोग निकाल सकते हैं बट यहाँ पे probability पूछा नहीं गया है. ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 7 by 3 एंड एक में दिया गया है 5 by 3. So let's see. So this is the question that I have received from my students. देखते हैं कि हो सकता है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं भी हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये स्टेट नॉर्मलाइज है कि नहीं है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं
आइगन फंक्शंस के उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे और देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। तो देखो इसको आप ऐड करोगे तो 1/3 होगा, प्लस ये 1/6 हो गया, प्लस ये हो गया 1/2। So if you add the two, it will become actually 3/3 or plus, sorry, 3/6 and plus 1/2. So that is actually 1/2 plus 1/2. So that is coming out to be 1. Okay. तो ये हम कह सकते हैं कि psi यहाँ पे जो है वो normalized है. This is normalized. Okay. So no need to normalize it. Now, when we know that when psi is normalized, probability of getting any energy is just the modulus of coefficient square. Okay. अनदर थिंग इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो एनर्जी इतना आएगा कि नहीं आएगा, वेदर वी विल गेट दिस मच एनर्जी और दिस मच एनर्जी इज और नॉट। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स टेल्स दैट व्हेन एवर वी डू ए मेजरमेंट फॉर एनी स्टेट, the outcome of measurement are actually equal to eigenvalues of the operator, okay, for which we are doing the measurement. Okay, तो हम लोग यहाँ पे measurement energy का कर रहे हैं, तो energy eigenvalues जो होंगे, okay, वो ही इसके outcome होंगे। तो यहाँ पे देखिए system is in superposition state, psi naught, psi 1 and psi 2 के superposition state में है, तो इसीलिए outcome of measurement जो होगा ना, outcome of, ये ध्यान रखें क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेसिक पोस्टुलेट है, ठीक है, आउटकम ऑफ मेजरमेंट is always equal to eigenvalues. Outcome measurement is equal to eigen values of operator which for which we are doing the measurement. So here we are doing energy measurement, तो इसलिए यहाँ पे outcome of measurement E naught, E1 और E2 होगा. These are the outcome of measurement. तो E naught हमारा ground state energy है, which is equal to, we know that it is equal to h cross omega by 2. E1 का value होता है 3/2 h cross omega and E2 is 5/2 h cross omega. ठीक है, तो अगर हम एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं ना, तो हमें एनर्जी का जो आउटकम ऑफ मेजरमेंट होगा वो ये और ये मिल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस एनर्जी इज नॉन जीरो, सो दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, ये हमें कभी मिलेगा ही नहीं, वी विल नेवर गेट दिस, वी विल गेट 5/2 बट वी विल नॉट गेट 5/3। ओके, बट वी आर गेटिंग h क्रॉस ओमेगा बाई 2। ओके, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए h क्रॉस ओमेगा बाई 2 हमें इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे ना, तो बस ये जो कोएफिशिएंट है इसका मॉडुलस स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, दिस विल बी 1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3 विच इज नॉन जीरो, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज एक्चुअली एवरेज एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू बेसिकली PI EI and summation on I, where PI is corresponding probability. Okay, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है वो 1/3 है, और यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा E नॉट, प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, प्लस एनर्जी इज E1 एंड प्लस थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है ना। वी विल जस्ट take modulus square of the coefficient and here energy is E2. So let's put the values. So you will put here values of energy, you will get h cross omega by 2 in all. So I'm taking this common, and now here 1/3 plus this is 1/6, and when you put E1 you will get a factor of 3, plus here you have 1/2, and when you put E2 you will get a factor of 5. 1/2 जो सभी में आ रहा है ना, that I have taken common. Okay, so now let's see what we get. So that's the average energy, h cross omega by 2, and here you get again 1/2 here, नहीं 1/2 नहीं आएगा, you how much will get, ये तो हमारा यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो वी गेट हियर 1/3 और प्लस दिस, व्हेन यू ऐड यू गेट हियर, आई थिंक 3 आ जाएगा यहाँ पे, you will get here 5 plus 1 6 and divide by 2, so that is 3. So we get, when you add the 2 you get here 10, so 10 and that will cancel with 2, so you are getting 5/3 h cross omega. So average energy is coming out to be 5/3 h cross omega, so that is given in this option. Okay, so D option is also correct. Okay, now this is a question from black body radiation. It is part of modern physics actually. The question says, for black body radiation, graph of u lambda, this is spectral density, okay, versus lambda plotted is plotted. So lambda m gives peak of u lambda. If temperature is doubled,
then what will happen? So these are the options. Okay, we know that its graph is something like this. Here we are plotting lambda, and this side we are plotting u lambda. That means spectral density. So if you plot it, you get something like this. कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है ना? And this wavelength corresponding to maximum is called lambda m. Okay, so this is the area under curve. This is the area under curve, ठीक है ना? तो एरिया अंडर कर्व आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू कैलकुलस दिस एरिया अंडर कर्व इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा. ओके, तो ये एरिया अगर हम निकालेंगे ना, तो दिस इज यू लैम्डा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा. ओके, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ऑलराइट, so that's it. तो हम लोग जानते हैं कि when spectral density is integrated over lambda we get actually energy density, और energy density is proportional to e power 4 होता है, ठीक है? It is something like this, 80 to 80 to the power 4. Okay, तो दिस इज द एरिया एक्चुअली. ये एरिया अंडर कर्व है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इफ यू डबल द टेम्परेचर, ओके, you will get a extra factor of 2 to the power 4, which is 16. So definitely if you double the temperature, area under the curve will become 16 times. Okay, so वही area of the curve will become 16 times if you double the temperature. Question says if temperature is doubled, so this option is correct actually. Okay, now we have Wien's displacement law, which says that lambda m into T is equal to constant. Okay, so obviously if you are doubling the temperature, to keep it constant you will have to make it half. Okay, so therefore if temperature is doubled, uh, u lambda peak occurs at half of lambda m. ठीक है ना? That is also correct option. Okay, so if you are doubling the temperature, you will have to make it half. Okay, to keep it to keep this product constant. All right, so इसके दो options correct हैं. All right, now let's move to another question. This is a question from electrostatics actually. This is a very basic question and I always discuss this question. But exactly the same question I always discuss in my classes. So you see there are two concentric spheres. These are shells, you can say. These are spherical shells. Spherical shells. And this shell is maintained at potential V naught, and this shell is maintained at potential 2V naught. And now question is at distance 3r by 2, what is the potential? Here, see, in this region between these two spheres, there is no charge. So charge density is 0. So therefore, we can apply Laplace equation del square V equal to 0. So this is a partial differential equation. And see, potential everywhere is constant actually. Okay. तो चारों तरफ पोटेंशियल कांस्टेंट है V नॉट, सो देयर इज स्फेरिकल सिमेट्री. ओके, तो यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है. So there is spherical symmetry. That means there is no theta or phi dependence. So therefore, this equation becomes very simple actually. 1 by r square and this ddr, and here you get r square and dv by dr. So now you just integrate this equation and you will get something like this. Okay, v is equal to some c1 by r plus c2. Okay, you may get minus sign here. So it doesn't matter whether you write minus here or plus. Okay, with both sign you will get the same answer. Okay, so now this is the potential in this region. Okay, this is the potential in any region. Okay, where charge density is 0. ठीक है, लेकिन हमें तो we are interested between these two surfaces, so we'll apply this equation. Okay, between these two surfaces. So let's apply boundary condition to obtain C1 and C2. Let's call it equation number 1. Okay. So boundary condition here is this. At radius r, potential is V naught. So when we put here capital R, we'll put here V naught. So we'll get here V naught is equal to some C1 divided by capital R plus C2. This is our second equation. Okay. And when you put potential 2V naught here, you see, when you take potential 2V naught, you'll have to put radius 2R. Okay. So we are getting here C1 by 2R and plus C2. This is our third equation. So let's solve it. Solve 1 and 2. So if you solve these two equations, okay, you just have to subtract the 2. Okay, if you subtract the 2, you will get here minus V naught is equal to C1 by 2R. So what I'm doing here, I'm subtracting 3 from 2. Okay, so I'm subtracting 3 from 2. So that gives you minus and C1 by 2R. And so therefore you get from here C1 equal to minus 2V naught and R. Okay, so you put this value of C1 here,
you will get here C2. Therefore, C2 you are going to get is, you put this here, okay, so R will cancel out, you get minus 2 V naught, take it to this side, you will get 3 V naught, so C2 is equal to 3 V naught. Now let's put this into 1, use 1. Okay, so V will become equal to C1 is minus 2 V naught into capital R and divided by small r, and plus we have 3 V naught. Now we are calculating potential at R equal to 3R by 2. Okay, so let's put here 3R by 2. So we are going to get here minus 4 V naught by 3 and plus 3 V naught. When you put 3R by 2, this R will cancel out. Okay, so we get here 9 minus 4, so that is 5 by 3 and V naught. That's the answer. Okay, so this was another simple question. See, the question is not straightforward. It's not a question of this type that you just look at the question and you write the answer. Yeah, you will have to do the calculation, but calculations are very simple actually. Now this is a question from wave actually. Okay, this question says amplitude of wave when it travels. Amplitude of wave when it travels. Obviously, it should be travels. Yeah, ऐसे लिख देते हैं, travels in string of mass density mu1 is 0.5 and 0.7 when it travels when wave travels in mu2. That means it travels in a string of linear mass density mu2. Okay, so then mu1 by mu2 is, see, this question is not very clear to me. Okay, मुझे ये नहीं इसमें समझ में आ रहा है कि वेव मतलब ऐसा दोनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है, मतलब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि वेव सी इट्स डायरेक्शन इज नॉट गिवन कि वेव इधर इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज नॉट गिवन एक्चुअली। ठीक है, तो हम अगर देखिए यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि वेव इधर जा रहा है, ठीक है ना, इफ वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका 0.5 है and it enters into this region, then amplitude becomes 0.7, then that is not possible actually, क्योंकि आप जानते हो कि वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो एक्चुअली उस some part of it gets reflected. Okay, so here amplitude should decrease, so we cannot assume that wave is going in this direction, क्योंकि 0.5 से 0.7 फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, so we'll have to assume like this. Okay, the wave was wave was traveling initially in this medium, and it basically enters into the second medium. So second medium is this one actually here. Okay, so because of which initially its amplitude, it was something like this. So its amplitude was 0.7, and when it enters into another medium, because of reflection, its amplitude decreases. Okay, तो ये हम लोग assume कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली देखो, जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर आल्सो we say something like this, कि suppose there is a medium of refractive index n1 and this is a medium of refractive index n2, and suppose wave goes from this medium to this medium. Here suppose amplitude is ei and here amplitude is et, transmitted amplitude. Then we have a formula for et, e transmitted is equal to some factor we get here. I think we get here 2n1, I think 2n1 and divide by n1 plus n2 and e incident. That is the formula. Okay, so this is the amplitude of transmitted wave and this is the amplitude of incident wave. Okay, somebody is calling. So ये amplitude of transmitted wave है and this is amplitude of incident wave. So this we learn in electromagnetic theory. Okay, see, this relation is actually true for most of the waves actually. So if a wave is traveling on a string and it is going from one medium to another medium, this relation is true for that case also. So in for electromagnetic wave, we know that refractive index n is actually given by c by v. Okay, it is c by v. So here, if you write c by v everywhere, c by v1 and c by v2, you end up getting this formula. Et is equal to 2 times, and you get here v2, because you will write 2 by v1 and here, so 2 by v2, and you will get here v1 plus v2. Okay, and E incident. So that is the formula that you get. Okay, for electromagnetic wave.
So this formula actually applies for a string also, because in case of a string, we do not define refractive index, but we define speed of wave in the string. Okay, so therefore this formula will be applied for string actually. So this is the speed of the wave in second medium, and v1 is the speed of wave in first medium. Now, actually, for string, speed is given by something like this: tension in the string and divided by linear mass density. Okay, so that is the speed of wave in a string, which is maintained at tension T. Okay, तो हम लोग अगर v की जगह पे ये पुट कर देते हैं, सी टेंशन, इफ द टू स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, टेंशन इन द टू स्ट्रिंग विल बी सेम एक्चुअली. So T will cancel out actually, and so here we will get let us write like this: amplitude of transmitted wave will be equal to, here you will get root under mu1 and divided by root under mu1 and plus root under mu2, and here amplitude of incident wave. Okay, so in this case, see, the notation is somewhat different. Okay, here actually हमारे लिए यहाँ पे जो है ना mu1 जो है, that is the linear mass density of first medium. So first medium is the medium in which wave is initially traveling. Okay, so first medium for us is mu2 actually. तो हम वो notation use करेंगे. तो transmitted wave का amplitude यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे first medium का amplitude sorry linear mass density mu2 है, और यहाँ पे हो जाएगा mu2, और प्लस यहाँ पे हमें mu1. बस नोटेशन को रिवर्स करना होगा, बिकॉज फर्स्ट मीडियम इज दिस एंड सेकंड इज दिस. सो हियर वी आर राइटिंग mu2. Okay, and here it is 0.7. So let's just do a little simplification. So you get here root under mu1 and divide by root under mu2 is equal to 7 by 5. Sorry, yeah, there will be a plus 1 factor also, right? So I'll just do cross multiplication. I'll bring it here and divide by this mu2. So mu2 by mu2 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा mu1 by mu2. Okay, so bring it to this side, this one. Sorry, there was a factor of 2 also. There is a factor of 2 here. Okay, so 2 I have missed. Yeah, there is a factor of 2. So you will get here, if you multiply it, you get here 14, right? 2 and 7 get multiplied, 14. So now bring 1 to this side. So you get here root under mu1 and by mu2 is equal to 9 by 5. So therefore we get here mu1 by mu2 is equal to 81 by 25. Okay, so that's the answer actually. So therefore you should get here, if you multiply, I think 3.24 आएगा answer. Yeah, we should get 3.24 mu1 by mu2, if I have not made any calculation mistake. So this will be the approach. Basically, this is the formula that we will be using here. Okay, this formula we will be using. Okay, answer should be 3.24, I think. Okay, now let's move to another question. See, the question says a magnetic bar is dropped into copper tube. So time of fall versus thickness of the tube graph is. Okay, thickness of ट्यूब के लिए जो ग्राफ होगा वो हमें बताना है कैसा होगा. सी द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. देयर इज ए copper tube, this is copper tube, and a bar magnet is being dropped here. Suppose this is north and south pole. So we know that because of some electromagnetic phenomena, when you drop it, it actually slows down. अगर आप दो मैग्नेट को साथ साथ ड्रॉप करते हैं ना, suppose you drop a magnet here and a magnet through this one. Okay, तो यहाँ पे because of electromagnetic induction, what happens actually, this magnet slows down and this doesn't slow down. तो अगर आप दोनों को साथ साथ ड्रॉप करेंगे तो ये जल्दी इस डिस्टेंस को ये जल्दी क्रॉस करता है, और ये थोड़ा बेसिकली कम देर में क्रॉस करता है. मतलब इट टेक्स मोर टाइम एक्चुअली. ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया, और ये एक वेल नोन फेनोमेना है. देयर आर मेनी डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. ओके, सभी बुक्स में इसके बारे में मेंशन किया हुआ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे ड्रॉप करेंगे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, दिस मैग्नेट स्लोज डाउन. ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो इसकी थिकनेस है इसको हम बढ़ा देते हैं. तो देखो थिकनेस बढ़ाने का मतलब बेसिकली ऐसा होगा ना कि यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉपर ट्यूब. तो देखिए एक कॉपर ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट विल अपोज दिस according to Lenz's law. You can just say that the current that gets induced in this copper tube opposes the motion of this magnet. Okay, तो इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन होता है. तो अगर दो
अगर यहाँ पे कॉपर ट्यूब आ जाते हैं, तो दूसरे कॉपर ट्यूब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वो भी इसका अपोज करेगा, तो ये और स्लो डाउन होगा। तो अगर और स्लो डाउन हो रहा है तो टाइम इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि if we increase thickness, so increasing thickness is equivalent to saying that we are putting many coaxial copper tubes। तो हर कॉपर ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सभी इसका अपोज करेंगे, तो इसमें जो अपोजिंग फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा स्लो डाउन होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे थिकनेस हम बढ़ाएंगे तो इसका टाइम ऑफ फॉल जो है ना बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसमें देखिए टाइम ऑफ फॉल इसमें तो कांस्टेंट दिखाया है, इसमें मतलब थिकनेस बढ़ रहा है तो टाइम ऑफ फॉल घट रहा है, इसमें घट करके मतलब बढ़ करके घट रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर उसके बाद धीरे धीरे कांस्टेंट की तरफ हो रहा है। तो दैट विल एक्चुअली हैपन, क्योंकि जैसे थिकनेस अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये जो मैग्नेट है ना इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा डिस्टेंस पे फिर कम होने लगेगा, ठीक है ना। तो बिकॉज ऐसे भी आप जानते हो कि इस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है ना व्हेन मैग्नेट इज मूविंग, तो इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सर, ओके, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। सो एज r इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम लेस एंड लेस, ऑलराइट। तो इसीलिए फार डिस्टेंस पे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस, ठीक है। तो वहां पे बहुत कम करंट फिर इंड्यूस होने लगेगा, ठीक है। सो दोज करंट विल नॉट अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ और मोशन ऑफ दिस मैग्नेट दैट मच, ओके। तो इसीलिए फिर थिकनेस को अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं ना तो फिर फर्दर इंक्रीमेंट इन थिकनेस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसके डायनामिक्स पे। सो दैट्स व्हाई टाइम ऑफ फॉल विल स्लोली बिकम कांस्टेंट, ऑलराइट। बट इनिशियली तो थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो थिकनेस का इन्फ्लुएंस, थिकनेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो अपोजिशन टू दिस मैग्नेट विल इंक्रीज, देयरफॉर एक्चुअली इट विल स्लो डाउन, दैट्स व्हाई टाइम विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो इनिशियली टाइम विल इंक्रीज बट लेटर ऑन इट विल बिकम कांस्टेंट बिकॉज लार्ज थिकनेस पे फिर आर लार्ज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो लेस एंड लेस होता चला जाएगा, ओके। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट। Now let's discuss this question from mechanics. It says that which of the following is true for central force? See, the question says central force. It doesn't say that we are talking about gravitational force. Okay. तो हम लोग जानते हैं in central force motion there are two conserved quantity. One is energy and another is angular momentum. Okay. So in all central force motion energy and angular momentum are conserved. तो इसमें angular momentum तो conserved होगा ही, ठीक है ना। अब देखिए केप्लस थर्ड लॉ जो यहाँ पे लिखा गया ना, केप्लस थर्ड लॉ होल्ड्स, दिस इज नॉट ट्रू, ओके। केप्लस थर्ड लॉ डजंट होल्ड फॉर ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन, इट होल्ड्स ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ध्यान रखेंगे, केप्लस थर्ड लॉ ट्रू तभी होता है व्हेन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r square, is that okay? And as I said, angular momentum is conserved. So if momentum is conserved, motion has to be two dimensional. Angular momentum conserved होता है तो motion two dimensional ही होगा, ठीक है ना। Now it says Kepler's second law holds. तो Kepler's second law तो आप जानते हो कि it talks about aerial velocity and we know that aerial velocity is equal to होता है angular momentum divided by twice of mass. Okay, so if angular momentum is constant, aerial velocity will also be constant. So actually, aerial velocity remains constant in all central force motion. This is, is always discussed in all क्लासेस ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट को बताया जाता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन के ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसका ट्रू है, ठीक है ना। केप्लर सेकंड लॉ विल होल्ड बिकॉज केप्लर सेकंड लॉ जस्ट टॉक्स अबाउट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स, ओके। ठीक है, तो इसमें थ्री ऑप्शंस करेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑप्शन इज एक्चुअली रिलेटेड टू gravitational force, and here it is not clearly mentioned that we are talking about gravitational force. We are talking about central force which may not be gravitational, okay. Now let's discuss this question. It says graph for f of x versus x. So function is given to be is modulus x minus 1. Okay. तो इस फंक्शन को हमें प्लॉट करना है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस फंक्शन f of x is equal to x minus 1 होगा for x greater than 0 because we know that when x is greater than 0 we can write mod of x is equal to x. ठीक है, and f of x can be written as when x is less than 0 we know that mod of x is written as minus x and minus 1, okay. So that's what, so you can see this is, if we write this as y, so this is y equal to x minus 1, so this is a straight line and this is equation, also equation of a straight line. If you put x equal to 0 you are getting function to be equal to minus 1, okay. So therefore it should be something like this. See, this is f of x and versus x. See, both represent a straight line. This represents a slope of 45 degree, this represents slope minus 45 degrees, okay.
ये नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है। हियर कोएफिशिएंट इज +1, हियर कोएफिशिएंट इज -1। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ देखिए -1 से स्टार्ट होगा। यू पुट x इक्वल टू 0, यू आर गोइंग टू गेट हियर -1, एंड यहाँ से हमें बेसिकली पॉजिटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। 45 डिग्री एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहा होगा ये 45 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ से एक नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन बना देना है ऐसे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, ठीक है। वो थोड़ा कर्व्ड हो जा रहा है ये यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स द ग्राफ एक्चुअली। ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, दिस इज सिमेट्रिक। थोड़ा जिस तरह से इधर दिख रहा है वैसे ही इधर दिखेगा, सिमेट्रिक ग्राफ है ये। ओके, so that's the graph. Okay, so these were, somewhat interesting questions. I have not discussed calculative questions, okay, which involve lots of numerical calculation. Okay, I'll if I receive some more correct questions, I'll make another video of around 10-15 questions. Okay, so this is all for this video. And if you think that there is some uh, I mean mistakes in my calculation, because then you can just let me know that. Okay, I'm giving you my number. My WhatsApp number is, sorry, 8750270363। तो अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, कुछ डाउट्स हैं आपको, कोई कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी आपको फील हो रही है, ठीक है, यू कैन जस्ट सेंड मी योर मैसेज ऑन दिस नंबर। चलो तो अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।